Good morning, everyone. Just confirm that my audio is clear. You can hear me properly from chat section. So till now, 13 people, 13 today's webinar. I am sharing. We have Allies Blue trading platform. I will share screener feature on the our trading platform with one strategy. So now I think we should start. So first of all, I want to thank Allies Blue for providing me this opportunity for this webinar. And in today's webinar, as I shared that I'm going to share one strategy, trend following strategy with our Allies Blue screeners tool. So first of all, about me, my name is Narendra Joshi, and I'm from Mumbai. My qualification is I have done BCom from Mumbai University and MBA in Finance. Total experience is more than 12 years in stock market, and my trading style is trend following and price action. So one simple strategy I will share, in which we can see that how to create watch list using this strategy and how to trade in intraday. So I just confirm that if it is okay to go with English or Hindi and English. If you are comfortable in mix, okay. Okay, Bharat ji. English, okay. So I will try to do in both. Okay, no problem. So we will have this session in both languages. So first of all, we have to understand the concept of trend. If we are following trend trading strategy, we must know, we should know that what is the trend of the market. So if you understand, if you really go want to go with the flow of the market, you should be a trend follower. For that, you should know that what is the trend of the market. So from lower level, market is making high and then higher low, then again breaking previous high, and again making low which is actually higher than previous high. So it is an uptrend. So what is trend? Trend is simply the direction of the market, that is market moving up, down, or sideways. So there are basically three trends in the market: uptrend, sideways, and downtrend. So when market is going up, and for if you would have experienced that from last 2 3 days market is only going up, so the trend of the market is up. And if market is continuously breaking previous days low, and for 2 3 days, 5 days, 10 days, it is not going up, it is going down only, it is downtrend, very clear. And sometimes we experience that uh, market is not going anywhere, it is not breaking last week or last few days high, it is trading in a range, that is sideways market. So the idea about the trend should be very clear. ओके, तो जब भी हम लोग मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर हमको ट्रेंड के बारे में पूरा पता है, तो हम अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं. वी कैन मेक आवर स्ट्रेटेजी एज पर द following the trend of the market. So there are many traders who use some tools or indicator in trading. So some of the indicator I have shared here: moving average, RSI, super trend, MACD, stochastic, ADX. So most technical tools and system are trend following. So I want to know with our friends, those who joined us, which indicator you use if you are actively trading in the market using chart. Some of them would be following moving average or RSI or super trend. If you want to share,
which indicator you use. Okay. Okay. So we use some indicator to like to identify how to trade, where in which direction to trade. So जो भी इंडिकेटर्स होते हैं वो हमको एक आइडिया देते हैं मार्केट के बारे में. जैसे हम जो भी इंडिकेटर लगाएंगे चार्ट के ऊपर तो हमको एक आइडिया आ जाएगा. तो बहुत से ट्रेडर ये सारे इंडिकेटर्स यूज करते हैं, जैसे कि आपको मिस्टर शरद जी यूजिंग RSI, मिस्टर भरत यूजिंग some ready-made indicator this way, Mr. Chandra being okay. Okay, no problem. So I want to tell you that we use all these indicator, but the main indicator is price. In that, if we know that current market trend in that direction, if price is moving, we have to trade in that direction. So all our indicator will give you the same thing, but first price will move, then indicator will give us the signal. I hope it is very clear. So even after doing our own research, our analysis using indicators, many people, many traders cannot get expected return from the market. Why? Because there is one concept called market discounts everything. So this should be very clear in the whenever we come to trade in the market, that what is current trend of the market, because already some big players, insiders already know something which as a retail trader we don't know. So the principle explains that any information available in the market is already reflected in the price of stocks and indices. This includes all data such as earning announcement by companies, rise or fall in inflation, or even sentiments of the investor. So something we don't know. So that's why we are using some indicator. But if we are following price as per the trend, we can get some result. So the strategy is very clear. If we identify the short term trend of the market, we can comfortably trade in intraday or even short term. So for that, like some people are using moving average. So using that only, I'm giving you example. So now you can see that on the screen you can see the chart of Nifty 50. This is daily chart. On this chart I have added 20 EMA. This blue color line on the chart is 20 EMA. So we are very clear about the trend of the market. Whenever price is above, whenever any closing on daily basis is above this 20 EMA, for us short term trend is up. If it is closing below that, for us short term trend is down. So we have identified that how to, like using this simple indicator, what is short term trend of the market. So now one thing we have to do is that we have to trade in that direction only. So if the trend is down, we will try to trade using intraday time frame, whatever indicator you follow. So this is intraday time frame. This is 15-minute chart with super trend indicator. So now on short term time frame, our trend is down, and on intraday time frame also, the uh, if you check last 4 5 days chart, you see, if you compare both this big candle, if you see on intraday chart, if you come, then you could have easily get this trade. So I hope till now it is very clear that using one indicator or two indicator, whatever is comfortable to you, you can identify the short term trend of the market, and then you can trade in intraday with higher accuracy. If you want higher accuracy, if you have to follow the trend. So let's come on the rules. So after market watch, we first
have to create watch list for next day. Okay, so you have to open ls blue screener. You have to log in your account and open ls blue screener and check top volume stocks. So you have to understand all the rules to create simple watch list for next day trading. So I'm sharing this. You can get this screener here. So now in live market also you can select those stock, but if you do your if you do some homework, then you are prepared for next day. So what I do, I go to screener and then select top 100 stock. So you have all the categories available here. You can select nifty 50, nifty 100, 200. You can also select 200, but for today's session I am selecting nifty 100. So we get top quality stocks with highest volume. So some of the stocks are there. I try to select stock where price is more than 200 or 300. So जिन स्टॉक्स का प्राइस 200-300 के ऊपर होता है वो मैं सेलेक्ट करता हूँ. आपको एलआईएस ब्लू के यहाँ पर स्क्रीनर पर आना है और यहाँ पर सेलेक्ट करना है निफ्टी 100 के स्टॉक्स को. सो टिल नाउ इफ यू हैव okay, so till now I hope you आप सबको ये स्ट्रेटेजी समझ में आ गई है. हम लोग पहले शॉर्ट टर्म का टारगेट जो है मार्केट है, शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड है उसको पकड़ते हैं. उसके बाद में इंट्राडे के टाइम फ्रेम पर आते हैं. उसके लिए हमारे पास एक रेडीमेड अवेलेबल स्क्रीनर है जो हमको एलआईएस ब्लू पे मिल जाता है. उसके लिए आपको कहीं और दूसरी जगह पे जाना नहीं है, आपके ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा. तो मैं यहाँ पर देखता हूँ निफ्टी 100 स्टॉक्स और उसमें भी मैं फिल्टर कर लेता हूँ कि कौन से स्टॉक में यहाँ पे हमको वॉल्यूम सबसे ज्यादा मिला है यहाँ से. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू कैन सी ओएनजीसी, एनटीपीसी, एचडीएफसी, ऑल स्टॉक्स आर देयर. दीज आर ऑल टॉप स्टॉक्स विथ क्वालिटी, company management, all the good things are available here. So these are coming under nifty 100. So you get volume, price action, you get everything. So you have to select the best. तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको ट्रेड कहां पे करना है, वेयर यू हैव टू एक्चुअली व्हाट यू हैव टू सी एंड वेयर यू हैव टू इंटर, बिकॉज देयर आर मोर देन 5000 stock. Now I have selected 100 stock, but from that also for intraday you need only 2, 3, 4 stocks for your trading. So you have to understand where to trade, what to trade. If it is clear, then you can simply create your simple strategy and trade. So आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको अपनी आफ्टर मार्केट वॉच लिस्ट बनानी है. कम से कम एटलीस्ट 8 to 10 stocks are there, should be there, so that you can select 4, 5 quality stock for next. So add watch list as per the trend of the market. So now current trend of the market as per whatever indicator we use, you have to select. So here I have selected 20 EMA. So as per that, market trend is down. Okay. So now on chart you can see this is 9 EMA. I am changing it to 20 EMA. Now see, as per the market trend, the short term market का जो trend है वो थोड़ा down है. 20 EMA में use कर रहा हूँ. आप लोग you can use any in EMA 10, 9, 13, 15, 20, 21 for short term, not more than 20 और 30 के आगे आपको नहीं जाना है. आपको 30 तक या 21, 20, 15, 13 ये आपको यूज करना है. तो आपको पता चले कि शॉर्ट टर्म का ट्रेंड क्या है. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, थोड़ा हमको अंदाजा मिल जाता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है. यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से ऊपर, एक साइडवेज मार्केट, लेकिन वीकनेस है मार्केट में. थोड़ा अपने को अंदाजा मिल जाता है कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है. और आप देख सकते हो कि इस तरह से मार्केट में मूवमेंट हो रही है. तो अगर आप देखते हो तो शॉर्ट टर्म में, फॉर शॉर्ट टर्म एटलीस्ट हियर यू कैन सी that around 15,900 is a good resistance. If it is breaking as per this indicator, and again as per the resistance on the Nifty, it is very good resistance. Once we get any closing above that, for short term at least market थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है. कम से कम इस ट्रेंड लाइन को
फॉलो कर सकता है, तो 200-300 पॉइंट ऊपर जा सकता है। तो वहां पर हमको बाइंग चालू करनी है। तो हम अपने स्क्रीनर पे आके देख लेंगे कि कौन कौन से स्टॉक यहाँ पे हमको मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टॉक्स निकाल के रखे। आई हैव लिस्टेड सम स्टॉक इन माय वॉच लिस्ट, सो वी विल चेक वन बाय वन। So now first stock is Tata Consumer. So understand the rule. What is the rule? Add watch list as per trend. Add on daily chart EMA. You have to short term के लिए आपको ये देखना है कि कितना कौन से स्टॉक आ रहे हैं हमारे लिस्ट में, जो 20 EMA ऊपर है या नीचे है, और उनमें भी हमको सेलेक्ट करना है कौन सा ट्रेंड के साथ है। तो चेक लास्ट 2-3 डेज रेंज, और जो रेंज में है चल रहे हैं उनमें ब्रेकआउट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में प्राइस एक्शन काम करता है। तो वहां पे आपको ये देखना है कि ट्रेंड के साथ कौन सा, अगर ट्रेंड के साथ कोई स्टॉक जा रहा है तो हम उसी ट्रेंड में काम करेंगे। और जो स्टॉक, विच स्टॉक आर नॉट फॉलोइंग आर दिस क्राइटेरिया, द रूल, वी हैव टू सिंपली अवॉइड देम। सो नाउ इट इज वेरी क्लियर दैट we are going to follow the trend. Now we are expecting that मार्केट में थोड़ा बहुत मोमेंटम बन रहा है ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा रेसिस्टेंस है, देयर इज अ स्मॉल रेसिस्टेंस अराउंड 15,750. सो इफ मार्केट इज ब्रेकिंग दैट, वी कैन एक्सपेक्ट सम अपसाइड, but the short term trend is down only. But in intraday we have selected some stocks. If market is trading in intraday in higher than previous high, for that we can go long. If it is going below previous low, we can expect again some weakness. So this is simply the continuation of the trend for short term. So those stocks which I have listed here, first is Tata Consumer. Now what we have to do, we have to find out the levels. Now see, this stock as per the 20 EMA, it can go little, it can show some upside here. So now see, this is the level of upside on around 735, this level, because you can see that stock can break this level, and if it get the closing above 735, तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, इस स्टॉक को बाय कर सकते हो इंट्राडे में। तो अपने को एक स्टॉक मिल गया। दूसरा स्टॉक है अपने पास इंडसइंड बैंक। अभी इंडसइंड बैंक यहाँ पे नीचे चल रहा है, लेकिन आप देखो कि लास्ट 2 दिन का क्लोजिंग यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। लेकिन अगर इंट्राडे में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, ग्रीन में है, तो हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग पहले क्या देखेंगे, हम लोग शॉर्ट टर्म का ट्रेंड देखेंगे कि ये डाउन है, लेकिन यहाँ पर एक रेसिस्टेंस का भी लेवल है जो कि है 815 के आसपास में। 815 एक लेवल बना रहा है, जहां पे ये अगर ब्रेक करता है तो इंट्राडे में, क्योंकि स्टॉक्स थोड़ा मोमेंटम दिखाएंगे तो मार्केट भी बढ़ेगा। तो ये सिंपल हमको समझना है कि कहाँ पे रेसिस्टेंस है, तो अगर वो ब्रेक करता है तो भी इंट्राडे में हमको आधे 1% से 2% की मूवमेंट मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड थोड़ा नीचे से ऊपर की तरफ भी जा रहा है, तो ऐसे स्टॉक भी हम लोग रखेंगे। लेकिन जहां पे रेसिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो हम लोग वो बाय करेंगे। लेकिन जहां पे सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, अगर कुछ दिन बाद मार्केट वीक हो जाता है, तो अगर ये इसने जो लो लगाया हुआ है वो भी ब्रेक करता है, तो हम लोग शॉर्ट भी जा सकते हैं इंट्राडे में। सो दिस वे यू हैव टू क्रिएट योर वॉच लिस्ट। सो उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो तीसरा स्टॉक है एसीसी का। एसीसी के ऊपर भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको लेवल दिखेगा अराउंड 2120। अभी 2120 के आसपास में 20 की ईएमए भी क्रॉस हो रही है। अगर इसके ऊपर ये स्टॉक जाता है, इंट्राडे में क्रॉस कर रहा है, 1 दिन 2 दिन बाद जा रहा है, तो इसमें हमको अपसाइड देखने को मिल सकती है। सो दिस वे यू हैव टू क्रिएट वॉच लिस्ट एंड वेट फॉर द लेवल टू ब्रेक इन द इंट्राडे मार्केट। यूजिंग दिस यू कैन ऑल्सो ट्रेड फॉर शॉर्ट टर्म। स्विंग ट्रेडिंग के भी आपको यहाँ पे आइडियाज मिल सकते हैं, लेकिन आपको ये सिस्टम को समझते समझते काम करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लोग ने देखा है कि मार्केट ट्रेंड कैसे फॉलो करता है। आप अगर इस 20 ईएमए को भी देखोगे तो आप यहाँ पे इंट्राडे में भी ट्रेड निकाल पाओगे। थर्ड स्टॉक इज एल एंड टी। अभी एल एंड टी में भी हमको यहाँ पे
कुछ ना कुछ एक लेवल दिख रहा है यहाँ पे 1515 का। शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन है। अगर आप प्रीवियसली यहाँ पे देखते हो 7 जुलाई जून के दिन, तो एक ब्रेक किया था लेवल को, 20 EMA को ब्रेक किया, एंड देन मार्केट स्टार्टेड मूविंग लोअर साइड. सो you can see that from 1600 लेवल इट मेड लो ऑफ अराउंड, यहाँ पे आप देख सकते हो 1450 के आसपास यहाँ पे एक लो बन गया अच्छा खासा. सो दिस डाउन ट्रेंडिंग मूव यू कुड हैव गेट if you understand that how trends are created in the market in stocks. So this way you have to understand that किस तरह से काम होता है. प्रीवियसली एक बड़ी मूवमेंट यहाँ पे आपको देखोगे 1 अप्रैल को मार्केट क्लोज्ड अबव दिस 20 EMA एंड देन इट मेड सम अपसाइड. सो दिस वे आप अपनी वॉच लिस्ट बनानी है और लेवल के लिए वेट करना है, सपोर्ट का लेवल या फिर रेसिस्टेंस का लेवल. उसके बाद हम लोग देखेंगे ये आईसीआईसीआई बैंक है. अभी ये बहुत अच्छा एग्जांपल है दैट अगर बैंक निफ्टी इंट्राडे में पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है एंड द स्टॉक दिस आईसीआईसीआई बैंक इज ब्रेकिंग इट्स हाई ऑफ अराउंड 715, सो यू कैन इजीली बाय दिस विद द स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 1%, 1.5%. So what is our rule? So now we made our watch list and now we coming on our live market. So now market opens at 9:15. So you have to add super trend indicator 10 and 3. Okay. So just reply me in the chat box that are you comfortable using super trend indicator? You know how to use आपको पता है कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर कैसे यूज करना है. Do you use super trend indicator? I want everyone to reply so that I can explain it in my way. Okay, almost. Okay. So now, okay, okay, there are people who don't know super trend, not really much who knows. Hello, audio should be very clear, I hope. Okay, noise in super trend. Okay, no problem. So we have solution for that. Okay, now see for intraday we can use 15-minute chart. See, again I'm telling you I have more than 10 stocks in my watch list. So you want trade in some 3 to 4 stocks only. So you have to, there you can easily avoid the noise. Okay, so now if you have selected some stocks for your intraday, so now I am adding super trend here. Now see, you have to create layout for that. This layout is for 20 EMA. So now 15-minute time frame, I am coming on the 15-minute time frame. So आपको क्या करना है, आपको जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है उसको लगाना है. तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर पे आपने अपनी वॉच लिस्ट बनाई है और मार्केट अगर ऊपर या नीचे है, तो अगर ऊपर है तो आपको बाय करना है. वेयर आप कभी बाय करना है, आपको जब एक रेसिस्टेंस का ब्रेक होता है तो. नाउ सी, वी आर कमिंग ऑन द 15-minute chart. Now see, this is the level of resistance. Now what is the super trend? As per the super trend, what is trend of the market? It is up only. So if stock is breaking this resistance, then you have to buy. You have to buy Tata Consumer above 735. 735 is the level where you are getting a resistance on the chart. So what was the trend on the short term? See, on short term also we have got Tata Consumer was trading near resistance. Now see how you can get stocks for your trading, intraday trading. Especially intraday trading we have to focus. Now see, there is a resistance on chart and stock is almost at this 20 EMA resistance level.
and in intraday, if you are hitting this level as a resistance and market is opening somewhere around this level, opening around inside previous day's range, then you have to wait for this to break. Can we order limit price? Yes, yes, yes. Wait for cross. Yes. Now see what is our criteria. If we have got this data consumer that it is almost at resistance of 20 EMA. So if price is getting opening around this level, you have to see that if it is breaking 735 level, then you have to enter at least one or 2 point plus minus. You can see that, you can manage that. But what will be our entry? Above 735 only. And we have to see that if market is also trading in positive, market is also trading up, so there you can get some stocks. So you don't need to depend on anyone. So you can find your watch list. So what was our criteria? We have to, हमको स्क्रीनर में जाके देखना है कि हमारे स्टॉक्स में जो टॉप 50 टॉप 100 एंड यू कैन गो अप टू 200 ऑल्सो। आपको क्वालिटी ट्रेड करना है तो आपको दो निफ्टी 200 तक आपको मिल जाएंगे बहुत सारे स्टॉक जिनमें आपको अपना क्राइटेरिया फिट होता है। 3 minute time frame. So as per your requirement, as per your nature, if you want fast trade, you can reduce the time frame. If you want less trade but quality trade, more quality, you want to filter more, तो आपको वहां पे वेट करना है कि मेरे पास 4 स्टॉक है, 4 में से एक में भी अपने को एंट्री मिल गई, वी आर हैप्पी। तो आपको, अगर आपको क्वालिटी की तरफ जाना है तो आपको अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कि आपको कम से कम ट्रेड चाहिए और अच्छे क्वालिटी के ट्रेड चाहिए। लेकिन देयर आर मेनी पीपल हु आर स्कैल्पर इन इंट्राडे मार्केट, दे ट्रेड फॉर स्मॉल स्मॉल टारगेट। फॉर देम दैट मिस्टर एन as saying 3 minute time frame with a 10 and 2 strategy over 5 years, that also you can use as per your whatever strategy you are following for from years. But here thing is, you should know what to trade. First you got the stocks where you are getting stock as per the trend of the market, then you are coming in intraday time frame, so that you can wait for entry where you are checking support or resistance level as per the intraday market, where nifty or bank nifty trading weak or strong. So you have to trade in that direction only. If we expect for some days that market थोड़ा ऊपर जा सकता है, तो हम लोग यहाँ पर ऐसी वॉच लिस्ट रेडी रखेंगे कम से कम 5-7 स्टॉक की जो ऊपर भी जा सकते हैं। सो दो स्टॉक विच आर अबव 20 EMA, तो वो थोड़ा ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये HDFC बैंक है, तो यहाँ पे आप देखो, ये हम लोग बैंक निफ्टी को यहाँ पे कंपेयर करते हैं, हम लोग बैंक निफ्टी में आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डेली चार्ट है, इसके ऊपर मैं अगेन 20 EMA कर देता हूँ। 20 EMA मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, आपको अच्छे से दिखना चाहिए, सो दैट आई कैन, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। नाउ सी ऑन निफ्टी बैंक, you can see that market is at almost at its short term resistance level. Now see, this is the resistance. I hope you can understand that market ने ये level नहीं break किया है। ये level जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 33,700 और 800, इस level को break करेगा तो market अपना 20 EMA उसको भी break करेगा और थोड़ा upside तो हमको देखने को मिल सकता है। So this is in general you can expect that अगर market is closing above this 20 EMA, some upside we can see. The same pattern we have seen here also, as you can see. And once after 2-3 days consolidation, it also broke the 20 EMA downside, and then we saw the downside also. So आपको अपना जो ये सिस्टम है, जो मेरा सिस्टम है, अगर आप फॉलो करते हो तो भी आपको अपनी वॉच लिस्ट बना के रखनी है। अगर आपका कोई स्ट्रेटेजी है तो उस हिसाब से आप पहले वॉच लिस्ट बनाओ, फिर इंट्राडे में ट्रेड करो। So I hope that it's very clear. So this way we have also got HDFC Bank. So now it has closed above
20 EMA after some consolidation. You can see the last 4-5 days consolidation is there, and if market is trading above 136165, 1360-65 के ऊपर ट्रेड करता है, तो HDFC बैंक भी थोड़ा अपसाइड हमको दिखा सकता है, क्योंकि ये इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड चेंज हो सकता है क्यों, और इसके साथ में बैंक निफ्टी है वो भी अपना एक लेवल ब्रेक कर सकता है. सो दिस वे आप अपना ट्रेड बना सकते हो. तो यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं और यहाँ पे इंडिकेटर ऐड कर देते हैं, सुपर ट्रेंड. सो नाउ देयर शुड बी नो डाउट. अभी देखो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है उस हिसाब से ये स्टॉक भी जाता है. तो यहाँ पे ये लेवल है, तो अगर इसका जो ओपनिंग है, इफ दिस स्टॉक HDFC बैंक ओपनिंग अराउंड इट्स क्लोज ऑफ 1355, वहां पे ओपन होता है एंड देन इट स्टार्ट ब्रेकिंग 1360-1365 लेवल, you can buy this stock with a stop loss of around 1%. So what is our criteria for stop loss? Our stop loss rule is around 1.25 maximum, 1 to 1.25, और टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 0.5% से 1%, 2%, यहाँ तक आप जा सकते हो अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज करते करते. बट वेट फॉर प्राइस एक्शन. प्राइस एक्शन अगर उस डायरेक्शन में हो रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है और वो अपना लेवल ब्रेक कर रहा है, 20 EMA के ऊपर जा रहा है, कोई रेसिस्टेंस का लेवल ब्रेक कर रहा है, तो हम लोग HDFC बैंक को बाय करेंगे ये अपना हाई ब्रेक करने के बाद. तो उसके अंदर एक और चीज आ सकती है, अगर मार्केट खुला पॉजिटिव है और ओपन लो सेम बना दिया बैंक निफ्टी ने, तो दैट ऑप्शन ऑल्सो इज देयर कि हमको और हायर एक्यूरेसी का ट्रेड बन सकता है. तो वहां पे हमको ब्रेकआउट के ट्रेड मिलेंगे. अगर मार्केट का ट्रेंड वीक है तो वहां पे ब्रेकडाउन के ट्रेड मिलेंगे जहां पे मार्केट ओपन और हाई सेम बना देगा. सो दिस शुड बी वेरी क्लियर कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द मार्केट एंड देन वी विल ट्रेड इन इंट्राडे. सो दिस स्ट्रेटेजी is very simple to follow. We have screener on our Allies Blue trading platform, that if you use this for at least 30 days, अगर आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आई और आप 30 डेज के लिए इसको यूज करते हो, तो आपको उसके अंदर और उसको प्रैक्टिस करके और कॉन्फिडेंस आएगा कि यहाँ पे आपको इंट्राडे के लिए स्टॉक्स मिल सकते हैं. सो आई होप के ये स्ट्रेटेजी आप लोगों को समझ में आई है, तो उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो. तो अगेन जो स्ट्रेटेजी है वो कैसे चल रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट का साइकिल, मार्केट इज ट्रेडिंग एज पर द इट्स साइकिल. सो sometimes there is uptrend, sometimes there is downtrend, and sometimes market is sideways. So sometimes people are confident that market will go up, they start buying, and somewhere market makes it high and not able to break. So people start doubting that क्या मार्केट ऊपर और जाएगा, तो वहां पे लोगों को डाउट होता है. तो वहां से फिर मार्केट थोड़ा नीचे आता है, लोगों को डिप्रेशन होता है, एक फियर होता है. लेकिन फाइनली जैसे मार्केट थोड़ा ऊपर जाने लगता है, जैसे कि अभी शॉर्ट टर्म का ट्रेंड है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी है वो नीचे से, अभी इतना ये मार्केट नीचे आया है, तो यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकता है. वी कैन एटलीस्ट एक्सपेक्ट दिस. लेकिन हम लोग कभी ट्रेड लेंगे, जब भी हमारा ये लेवल एक बार ब्रेक हो जाएगा. यू कैन ऑल्सो यूज लाइक लेट से EMA, हम लोग EMA 9 को भी लेते हैं. तो अभी ये आप देख सकते हो 9 के हिसाब से यू कैन सी देन मार्केट ऑलरेडी थोड़ा तो ऊपर जा सकता है. लेकिन अगर ये दोनों को भी क्रॉसओवर कर लेता है तो और भी ऊपर जा सकता है. सो हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे और उसको फॉलो करेंगे. तो हमारा जो एक मार्केट की साइकिल को हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारे जो इमोशन है, हमारा जो ये सिस्टम है, उस हिसाब से जा रहा है. तो हम लोग और कॉन्फिडेंटली मार्केट में यहाँ पे आ सकते हैं ये ट्रेड करने के लिए. लेवल का वेट करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है, उसको ब्रेक करेगा तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं. सो अगेन हम लोग एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी है कि हम लोग हमारा जो एलाइज ब्लू का स्क्रीनर है उसको
यूज करेंगे। जो टॉप वॉल्यूम स्टॉक्स है जिसका प्राइस एटलीस्ट 200-300 के ऊपर होना चाहिए वो हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद 20 EMA ऑन डेली चार्ट आफ्टर मार्केट ऑल्सो यू कैन यूज दिस, और लाइव मार्केट में भी आप यूज कर सकते हो कि कोई स्टॉक अगर इंट्राडे में इफ एनी स्टॉक इज देयर एंड विच इज ब्रेकिंग इट्स हाई और low as per the market trend, we will select this. So to we have to see that what is the range of 2-3 days. If it is breaking that range, we can trade, और जो स्टॉक्स नहीं आते हम उसको रिमूव कर देंगे। और फिर अगर हम इंट्राडे मार्केट में आएंगे तो हम लोग 15 मिनट का चार्ट यूज करेंगे, वहां पे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर यूज करेंगे, जहां पे इंडिकेटर के हिसाब से अगर ऊपर है या नीचे है वी विल ट्राई टू सेलेक्ट दोज स्टॉक्स, और वी विल एक्सपेक्ट कि वहां पे अच्छा 1%, 2%, 3% का एक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1.25% और मैक्सिमम 1.25%। एंड विद आर रिस्क मैनेजमेंट, हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट होगा, अगर हम सुपर ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा स्टॉप लॉस को रिवाइज करते जाएंगे। एंड वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करो, यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे। सो दिस स्ट्रेटेजी एटलीस्ट फर्स्ट यू प्रैक्टिस फॉर 30 ट्रेडिंग सेशन, देन आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। सो आई होप दैट ये you'd have learned something from this webinar, and after webinar also if you have any doubt you can WhatsApp me on this number. And now we start a question answer session. If you have any question you can ask me. Thank you. Yes, you can use this in stock future also, but same strategy you follow where you are getting stocks as per the trend. You can use 10 EMA, 9 EMA or 13 EMA or 20-21 EMA, any one or two combination of 2-3 moving average also you can use. You can add instrument of equity future, Nifty Bank Nifty futures. Okay, so the main thing is you should know that what is the short term trend of the market. As per that only you have to trade with the whatever stop loss as per the super trend in the market you can get. You can definitely use this strategy. Thank you, sir. Thank you, Satish, sir. So anyone, any doubt using the strategy? CD, it is I think it is MACD. This is a this is a this is indicator which you can use. MACD, I think you are asking for MACD, Mr. Judal. Mr. Judal Hari Bhai. So this indicator is called MACD. So as per this also, if you are if you can see the Nifty Bank, so some crossover is there. That crossover means that some upside we can see in the market. And here this histogram, this is called histogram. This is also included in this indicator. So it helps to get trades as per the crossovers. Here this is zero line. If it is crossing above that, then that means that it can go up. Some upside you can see. So you have to practice this as per the this is the this is short term time frame. You can also use this on 15-minute chart, hourly chart. Any more questions? I hope that strategy is very simple and very clear, so there should be no doubt. Okay, see, let's remove all this and try to understand super trend. SUPE. A super trend is indicator which you can follow in the market on for intraday. If this is the super trend indicator, now see 20 EMA I'm hiding, so you can focus on super trend indicator. Now see on 21st June, you can see that market opened somewhere here, breaking 2 days range. So super trend also show you the green signal. So how you should trade? Your best situation to trade is where market giving you first signal. Okay, now you are getting here green signal, but
when market breaks its high, this is best way to trade. So this is super trend indicator. Sir, no need to use all indicator because I use price action main, and then as per whatever indicator you are using, if price is breaking its high, its low, or its resistance or support level, you can use any indicator. But to keep your trading simple, use simple indicator. If you understand this, try to find out how other people use it. But best thing is just follow simple setup. What is short term trend of the market, what is intraday trend of the market, how nifty or bank nifty is trading, it is if it is trading up or down. As per that, you can even make your strategies in intraday in just 5 minutes. So this is super trend indicator I have added for sk jena sir. So I think there should be no doubt. See, here these red lines means that you have to simply focus on selling. Here green line means you have to just wait for buy. You don't have to uh, trade against that. If it is red line, if price is below, this is super trend indicator. If price is below this line, you have to sell only. If price is above this line, you have to buy only. Thank you, sir. Any more question? I hope the strategy you would have understood well, and you will keep practicing it. Sir, it is on Allies Blue only. You have to log in your account, and then screener option is there. You can get everything here. Just you have to see that how you filter these stocks. You can use Nifty 50, Nifty 200. Best is to trade Nifty 100 and stay in the range of 200 only. Sir, it is as per your requirement, as per your whatever you feel best. Because if you want high volume and want to trade fast, index and top 200, top 100, and even top 50 stocks you can trade with the Nifty Bank Nifty index. The best is to trade high liquid instrument. You can even go for options, but options should be around at the money or around the price of the index or stocks. You will get the best liquidity. So best is to trade these high volume, high liquid instruments. Yes, as in Allies Blue mobile platform also this is available. So you can just contact our team. They will help you in this. So I hope I have answered all your queries. If you still have any doubts, you can just WhatsApp me on this number. That is 8655 816123. I will try my best to help you in this. Thank you, everyone.